हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू रेडियो गांची 90.4 FM आपका अपना रेडियो। आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर लवनीश गौतम from the Commerce Department of Ranchi University. In this session, I'll be discussing a topic named Pricing Decision from the paper Marketing Management. This lecture is useful for both students who are pursuing their graduation and masters in commerce. For the reference purpose, I'll be using IGNOU study material which is available online so as to have a common reference book for everyone. In this session, I'll be covering the topics like relevance of pricing, meaning of pricing, determinants of pricing, which means what are the factors which affects the price of any goods or service, and the important points which needed to be considered while taking the pricing decision. So I will start by telling you the meaning of pricing. What is pricing? Pricing is a process of determining the value of any goods or service for which that goods and service will be sold to a customer. Which means what? That the process of determining the price of any commodity or service is known as pricing. So pricing is a process and its outcome is price. So what is price? Price is the value, or it is the amount of money which will be charged from the customer who is availing any service or who is buying any goods. And from the perspective of the manufacturer or the seller, pricing is the amount of compensation which he will receive in exchange of the goods or service sold. And from the point of view of the customer, it is the amount of money he will have to sacrifice for buying any goods or for availing any service. It can be expressed, it can be seen from our daily life that for every goods or service we have to pay a certain price. For example, if we live in an apartment or if we rent a shop, so what will happen? We have to pay a certain amount of money monthly, and that money is known as what? Rent. So rent is what? It is the price of availing the services, or what? It is the price of availing the apartment as in rent. Next, what? We people go to tuitions and coaching. There also we pay some price, which is what? Which is known as tuition fee and coaching fee. Similarly, we read in college. In college also, for availing the educational services, we have to pay certain price, that is known as what? Admission fee or college fee. So while coming to the college, if we come in any public vehicle, we have to pay some fare, bhada. Okay, that bhada is what? That bhada is nothing but the price of availing that carriage service. And if we have borrowed some money from the bank or from any relative, from anyone, so for that money we have to pay certain cost. That cost is known as what? Interest. So that interest is also known as what? The price of borrowing or lending that money. And suppose we people get a salary, or the laborers or workers get a wages. That salary and wages is also known as what? It is also the price of availing our manpower services. So for every goods or service we purchase or avail, we have to pay certain price. That price may be in the form of tuition fee, interest, commission, salary, taxes, etc. Now coming to my second topic, that is the relevance of pricing decision. Pricing decision is very much crucial for any seller or any manufacturer, because it is the only marketing mix which leads to the generation of revenue, and the other three marketing mix leads to what? Leads to certain amount of expenditure. Suppose we have four marketing mix: the product, price, place, and promotion. So for the product, we have to the seller or manufacturer has to be a certain cost. For the place means what? For the distribution thing, the manufacturer or seller has to be a certain expenses, and for the promotion purpose also he has to bear some expenses. But pricing is the only marketing mix which leads to the generation of revenue. So it is for this purpose pricing is very important. And the another reasons are, second thing is that
pricing affects the demand of that goods and services. So the way pricing has been done will have a direct influence on the demand of goods and services, which means the profit of the manufacturer or seller will be affected in a good or bad sense. Pricing is also relevant because it creates a reputation of the product in the market. Suppose if we take the example of Apple iPhone, so their pricing, they have set the pricing at an extreme level. So this is for what? This is for the creation of product differentiation. लोग सोचते हैं कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस बहुत हाई है. दैट मीन्स व्हाट? दे think that this product must have something which is, that is why it is so pricey, so expensive. So इस वो लोग क्या करते हैं? Pricing also determines the quality of a product or service, and there are other things also. Now pricing also affects your sales, pricing also affects your profit, pricing also affects your reputation in the market, pricing also affects the survival of your market. Suppose some product is not surviving, their demands fall drastically. So what they do? They generally reduces the price of their product so as to recover the demand. Now I will come to the factors which affects the price determination, which is what? There are many things which are kept in mind while deciding the price of any product. Out of those things, the first thing is the value of the product as perceived by the buyer. Listen, for every product we have some perceived value. अपने लोग घर से जब भी बाहर निकलते हैं कुछ भी प्रोडक्ट के सर्विसेज को बाई करने के लिए, अपने लोग प्री डिटरमाइंड होकर निकलते हैं कि नहीं इस प्राइस से जो प्रोडक्ट सर्विसेज को लेना है. फिर अपने लोग क्या करते हैं? सपोज किसी प्रोडक्ट को अपने लोग देखते हैं तो उसका क्वालिटी देखते हैं, क्वांटिटी देखते हैं, ब्रांड देखते हैं, और भी बहुत सारे थिंग्स देखते हैं. ठीक है, उसका इंग्रेडिएंट्स देखते हैं और फिर उसके हिसाब से वैल्यू करते हैं कि प्रोडक्ट का एक्चुअल वैल्यू क्या होना चाहिए. अकॉर्डिंगली उस अपने लोग जो वैल्यू लगाते हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, उससे उसका जो पर्टिकुलर प्राइस, उसका जो प्राइस प्रोडक्ट का अपने लोग उसको कंपेयर करते हैं. एंड अपने लोग यूटिलिटी अप्रोच में भी पढ़े थे ना कि जब व्हेन द वैल्यू और यूटिलिटी ऑफ अ प्रोडक्ट इज मोर देन द प्राइस, only in that case we purchase that product or avail that service. तो अपने लोग क्या करते हैं? हमेशा किसी प्रोडक्ट का वैल्यू को कंपेयर करते हैं उसके प्राइस से, एंड इफ द वैल्यू ऑफ दैट प्रोडक्ट इज मोर देन द प्राइस, देन ओनली द कस्टमर बाइज दैट प्रोडक्ट. सो अपने लोग को कंज्यूमर परसेप्शन है, कंज्यूमर वैल्यू को भी माइंड में रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर कंज्यूमर का प्रोडक्ट एक्सपेंसिव लग रहा है तो कंज्यूमर विल नॉट बाय दैट प्रोडक्ट और अवेल दैट सर्विस. Now come to the second component, cost of the product. Obvious है ना, अपने लोग कोई भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर रहे हैं, फॉर व्हाट? फॉर मेकिंग प्रॉफिट, फॉर जनरेटिंग इनकम. तो अपने लोग का क्या होगा? जितने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ रहा है, जितना भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ रहा है उसमें कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऐड करके प्राइस रखेंगे, तब तो अपने लोग क्या करेंगे? कॉस्ट भी रिकवर कर लेंगे, अलॉन्ग विद द कॉस्ट अपने लोग प्रॉफिट भी रिकवर कर लेंगे. इसमें दो चीज देखना होगा कि अपने लोग का कॉस्ट कितना आ रहा है. अगर कॉस्ट ज्यादा आएगा तो प्राइस अपने लोग ज्यादा सेट करेंगे. सेकंड थिंग वी हैव टू कंसीडर इज व्हाट? द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट वी वांट टू मेक. सपोज अपने लोग को 20% प्रॉफिट चाहिए तो अपने लोग प्राइसिंग क्या करेंगे? जो भी अपने प्रोडक्ट का कॉस्ट होगा, सपोज लेट द कॉस्ट इज 100 रुपीज, सो वी विल ऐड 20% ऑफ 100 रुपीज इन दैट ओरिजिनल 100 रुपीज एंड आवर प्राइस विल बी व्हाट? 120 रुपीज. Second thing is what? Competition. Competition is also affect the pricing of any product. अपन लोग देखेंगे जब भी अगर मार्केट में सेल करना स्टार्ट होता है तो सारे लोग सेल करना स्टार्ट कर देते हैं, which means what? सारे लोग डिस्काउंट देना स्टार्ट करते हैं. क्यों? क्योंकि अगर किसी भी बायर को कोई प्रोडक्ट सस्ते में मिल रहा है तो ऑब्वियसली दैट बायर विल ऑप्ट फॉर दैट प्रोडक्ट, चीप प्रोडक्ट. ठीक है, इफ द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज सेम एज माई प्रोडक्ट क्वालिटी, सो वो लोग क्या करेगा? उस प्रोडक्ट को बाय करेगा. तो कभी भी अपने लोग प्राइस जब सेट करते हैं, कोई भी एकदम कॉमन सा प्रैक्टिस है ये, कोई भी लोग प्राइस अगर सेट करता है तो वो लोग क्या करता है? दूसरे के प्रोडक्ट से उसको कंपेयर करता है, दूसरे के प्रोडक्ट के प्राइस से कंपेयर करता है, ताकि आपका प्रोडक्ट बाकी के कंपटीटर के प्रोडक्ट से ज्यादा एक्सपेंसिव ना हो. नेक्स्ट इज व्हाट? कंपनीज पॉलिसी. कंपनीज पॉलिसी मींस कि कंपनी क्या चाह रहा है. कंपनी को ज्यादा इनकम चाहिए, कंपनी को सर्वाइवल करना है, कंपनी को ज्यादा मार्केट बेस लेना है. सपोज जियो था कि उसको ज्यादा अपने लोग को ज्यादा कंज्यूमर्स लेना था, तो वो लोग क्या किया? प्राइस को कम रखा, ताकि क्या? कम प्राइस में ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर आएंगे. क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली इफ द प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, नहीं, डिमांड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? प्राइस. अगर प्राइस कम होगा तो डिमांड ऑब्वियसली क्या होगा? ज्यादा होगा. तो कंपनी को अगर ज्यादा डिमांड चाहिए तो इट विल हैव टू व्हाट? इट विल हैव टू सेट अ लोअर प्राइस. एंड इफ द कंपनी नीड टू मेक अ मार्केट रेपुटेशन और मार्केट value, then what will happen? It will set the price high, as we can take the example of Apple. ठीक है, वो लोग ऐसे ही किए, प्राइस, प्रोडक्ट का प्राइस को ऊपर रखना ताकि लोग क्या होगा? लोग को एक साइकोलॉजिकल वैल्यू डेवलप हो जाए प्रोडक्ट को लेकर के. तो क्या होगा? आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस को हाई रख रहे हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज व्हाट? नेक्स्ट डिटरमिनेंट इज गवर्नमेंट रेगुलेशन. आप लोगों को पता है दो टर्म, एक होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एक होता है एमआरपी.
What is the minimum support price? Minimum support price is that price which is decided by the government for in which any product or services cannot be sold below that minimum support price. तो क्या हो रहा है अपने लोग का minimum support price गवर्नमेंट तय करती है certain product and services का which are essential items or any other items, ठीक है, उसके नीचे आपका essential item actually नहीं होता है, ठीक है, उसके नीचे आप अपने प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकते, ठीक है, या कोई भी बाई नहीं कर सकता. दिस इज मेनली फॉर द फार्मर्स एंड अदर कल्टिवेटर्स, अदर पीपल. एंड सेकंड थिंग इज व्हाट? सेकंड इज मैक्सिमम रिटेल प्राइस. कोई भी मैन्युफैक्चरर और सेलर अगर कोई भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहा है तो लेवलिंग के टाइम में वहां पे मैक्सिमम एमआरपी के नाम पे वो एक अमाउंट लिखता है, which is what, which means that product cannot be sold above that maximum retail price. So क्या हो रहा है, गवर्नमेंट का पॉलिसीज वगैरह भी फॉलो करना पड़ता है. गवर्नमेंट अलग अलग पॉलिसी निकालती है, उसी पॉलिसी के अकॉर्डिंग अपने लोग को प्राइसिंग करना पड़ता है. सपोज अभी लोग को अपने पास क्या हो गया, अभी यहाँ पे पैंडेमिक आया हुआ है, कोरोना वायरस पैंडेमिक. तो यहाँ पे क्या कर रही है गवर्नमेंट, या तो लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वो लोग क्या कर रहे हैं, जो भी एसेंशियल प्रोडक्ट का एक हाईएस्ट प्राइस सेट कर रहे हैं, उसके ऊपर से कोई भी सेलर उस प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकता. तो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस आल्सो अफेक्ट्स द प्राइसिंग ऑफ एनी प्रोडक्ट एंड other elements of marketing. Other elements of marketing is your product, place and promotion. These three also affects the price of any product. So what happens if the product is a superior product, then the price of that product will be high. If the product is having a huge expense, advertisement expenses, then that expenses will be considered while pricing that product. So that was a brief about the pricing decision from marketing management. Rest I will continue in my next lecture. Thank you.